Hello students, how are you all? In your today's computer class, I am going to take the topic bits and bytes. So for your today's class, this is your topic bits and bytes. Let's get started with bits and bytes. So what is bits and bytes in computer? कंप्यूटर में आपका bits और bytes क्या होता है? So these are your smallest unit of storage in computer. What are bits and bytes? These are your smallest unit of storage. So what you can say? Smallest unit of storage. So this is your bits and bytes. Secondly, your computer memory is also measured in bytes. Computer memory is also measured in bytes. So this is your bits and bytes. First, it is the smallest unit of storage. As I have already told you that in computer whatever you are saving in the computer, आप जो भी कुछ सेव कर रहे हो, it is stored in the storage, in the memory. वो कहाँ सेव हो जाता है? मेमोरी में सेव हो जाता है. So your bits and bytes are the unit of storage. These are the smallest unit. सबसे छोटी यूनिट होती है आपकी bits and bytes of storage. सेकेंड, योर कंप्यूटर मेमोरी, जो आपकी कंप्यूटर मेमोरी होती है वो भी किस में मेजर की जाती है? It is measured in bytes. Now in your this class, I am going to read for you. So you have to come in page number 4 of your book. Topic is bits and bytes. The computer's memory, both primary and secondary, is measured in bytes. So just now I have told you that your computer memory, in the last class I had told you that your computer memory is of two types. One is primary and second one is secondary. Computer memory is of two types, primary and the second one is secondary. So your both computer memory, primary and secondary, are measured in bytes. So this is given in the first line. Second, 1 byte is equal to 8 bits, means 1 byte. 1 byte. This you have to remember, that your 1 byte. One byte equal to 8 bits. So class, you have to remember this. ये आपको याद होना चाहिए कि जो आपका 1 बाइट होता है वो किसके इक्वल होता है? It is equal to 8 bits. Understood? Next is each bit stores information as either 0 or 1. So what is given here? Each bit, जो भी आपकी bits होती है, it stores information either in 0 or 1. जो भी आपकी कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है वो आपकी बिट्स में स्टोर की जाती है एंड इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. और वो किस फॉर्म में स्टोर की जाती है? इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. नाउ यू आर थिंकिंग दैट व्हाट इज दिस 0 and 1 in computer. So let's see what is this.
Your 0 and 1 are binary numbers in computer. 0 and 1 are binary numbers. So what is this class? You have to remember this, that 0 and 1 are binary numbers and your computer language also. आपकी जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है, द कंप्यूटर विच अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज इज ओनली 0 and 1. कंप्यूटर सिर्फ क्या समझता है? 0 और 1 ही समझता है. दैट इज वाई वट एवर द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, and bits are in the form of 0 and 1. And what is 0 and 1? 0 and 1 are your binary numbers. So you have to remember just now this only, that information stored in the computer is in the form of 0 and 1. 0 and 1 की फॉर्म में ही कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है. And 0 and 1 are also known as binary numbers in computer. Let's read further. It may seem amazing, but it's true that all data, whether text, numbers, images, sound or video, is converted into bits 0 or 1 once it's get inside the computer. Therefore, what is an image for you is just a sequence of zeros and ones for the computer. So whatever you are saving, you are a child now. तो अभी आप बच्चे हो, तो व्हाट डू यू सेव इन योर कंप्यूटर? आप क्या क्या सेव करते हो? यू सेव गेम्स. आप अपने कंप्यूटर में गेम सेव करते हो. एंड व्हाट एल्स? यू सेव मूवीज. मूवीज आप सेव करते हो. सॉन्ग्स. एंड व्हाट एल्स? पिक्चर्स. So these all the things you are saving in your computer or laptop, but when computer save this in the memory, it is saved in the form of 0 and 1. अगर आपने कंप्यूटर में गेम्स को सेव किया है तो कंप्यूटर इसको कैसे सेव करेगा? कंप्यूटर विल सेव दिस इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. कंप्यूटर को आपका ये गेम्स किस फॉर्म में समझ में आएगा? इन 0 and 1. Similarly, your songs, your movies, your pictures, all things in the computer is saved in the form of 0 and 1, because only 0 and 1 computer can understand. सिर्फ 0 और 1 को ही कंप्यूटर समझ सकता है. So all this, your movies, song, whatever the file you are saving in the computer, it is first converted or changed into 0 and 1. वो पहले किस पे चेंज हो जाती है? 0 और 1 में चेंज हो जाती है. Then it is stored in the computer memory. तो जब आप अपने सेव करे हुए गेम्स कंप्यूटर में वापस ऑन करते हो तो इट इज गेम्स फॉर यू. वो आपके लिए क्या है? गेम्स है. बट फॉर द कंप्यूटर इट इज जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ 0 and 1. कंप्यूटर उसको क्या समझता है? 0 और 1 का सीक्वेंस ही समझता है. नाउ व्हाट एल्स इज गिवन इन दिस? इन जनरल, 1 character of text uses 1 byte of computer memory. Hence, word computer will need 8 bytes of computer's memory without the codes. So here, let's see one more example of bits. If you will type word computer in the computer system, अगर आपने ये वर्ड कंप्यूटर सिस्टम में टाइप किया है कंप्यूटर, एंड यू वांट टू सेव दिस वर्ड, और आप इसको सेव करना चाहते हो, तो हाउ मेनी बिट्स कंप्यूटर विल टेक? कंप्यूटर कितनी बिट्स लेगा? कंप्यूटर विल टेक 8 बिट्स. कंप्यूटर विल टेक 8 बिट्स. वाई? बिकॉज एवरी कैरेक्टर इज ऑफ 1 बिट इन द मेमोरी. यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स है? C इज 1 कैरेक्टर, O इज 1 कैरेक्टर, M इज 1 कैरेक्टर, P इज 1 कैरेक्टर, U इज 1 कैरेक्टर, T इज 1 कैरेक्टर, E इज 1 कैरेक्टर एंड R इज 1 कैरेक्टर. सो टोटल there are 8 characters, and for every character there is 1 bit in the computer memory. So here the word computer
will take 8 bits in the computer memory. For every character 1 bit is allotted in the computer memory and here it is not written inside the quotes. अगर हम इसको ऐसे quotes में लिखेंगे कंप्यूटर में, then special bits are given to this quotes. फिर quotes को भी अलग से bits दिया जाएगा. So this is the way how the characters are stored in the computer memory in the form of bits. Also remember that a space left between two words is also considered a character. Therefore, the text will consume 14 bytes of computer memory. Here you will see that I have written computer without giving a space. मैंने यहाँ पे space नहीं दिया है. So there will be no bits for the space. Memory कोई allocation नहीं देगा space को. And if I'll write the word with the space. Now here I have written the word computer with the space. अब आप देख रहे हो C के बाद space है, O के बाद space है, M के बाद space है. Now this space is also take memory. ये जो आपका space है ये भी आपकी memory में bits लेगा and 1 bit is given to this space. तो फिर आपका ये 8 bit से change होके how many space? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 are here. So here it will become 14 bits. So here the computer will take 14 bits storage. So space also takes storage in the memory in the form of bits. So this was your bits and bytes. You can read this topic on your book in page number 4. So this was all for your today's class. Thank you class. Have a nice day.